आलम अकेडमी स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मोहम्मद फैज़ आलम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द क्लास 9th। हम देखते हैं कि क्लास 6 क्लास 7 से भी ये सारे टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, these are the topics which we have to discuss today. Line segment, rays, types of angles, parallel lines, transversal lines. Okay, so we will talk about each and every these topics one by one. So let's start. बच्चों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइन सेगमेंट एंड रेज। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट लाइन। व्हाट इज लाइन? बेसिकली लाइन क्या होता है बच्चों कि जब हम बहुत सारे डॉट्स को क्या करते हैं, जब एक साथ ज्वाइन कराते हैं तो ये जो हमारा मिलता है ये क्या कहलाता है? दैट इज़ कॉल्ड द लाइन। ये क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। सो लाइन इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स। ओके, एंड इट इज़ अ वन डायमेंशनल फिगर। ये क्या वन डायमेंशनल फिगर है? it has only length. Okay, no width. इसका कोई width नहीं होता, सिर्फ length होता है। Okay, so one dimensional, we know about the one dimensional, two dimensional figure. For example, let's say that we have a rectangle, so we have length, we have breadth, two things are there. Okay, similarly if we talk about the three-dimensional figure, so we have like cube. Okay, so cube has length, breadth and height. Okay, it is length, breadth and height. So similarly this line is a one-dimensional figure. Okay, it has only length, no width, so that is called the line, and it can be extended in both the directions. Okay, infinitely. इस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों डायरेक्शन में हम कहीं भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है। वी डोंट हैव एनी स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी डोंट हैव एनी एंडिंग पॉइंट. We can extend this line in both the directions infinitely. So that is the concept of line. I hope you all have understood it. बच्चों, हम लोगों ने लाइन के बारे में जान लिया। ठीक है, लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट्स से दैट अगर ये एक लाइन है हमारा, ठीक है, इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट्स से इट इज़ ए, इट इज़ बी, सो वी राइट इट ए बी and the arrow will be like this. So it will indicate that it can be extended in the both directions. So इस तरीके से हम लोग लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक सिंपल स्मॉल लेटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंपली एम भी कर सकते हैं। लाइन, वी कैन राइट लाइन एम। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट क्या होता है? बेसिकली इट्स अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ लाइन. Okay, it's a part of line. Let's say that P and Q. So we can measure the value of PQ. Let's say that it is 5 centimeter. So PQ is a line segment. PQ is a line segment. So line segment में basically हमारा एक starting point भी होता है और एक हमारा ending point भी होता है. We have a definite length of line segment, but in case of line we don't have any fixed length. कोई फिक्स लेंथ हमारा लाइन में नहीं होता है। दोनों तरफ हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट में हमारा क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। सो इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ, सो दैट इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन। बच्चों, हम लोग रेस के बारे में बात करते हैं। ओके, रेस क्या है? बेसिकली अगर हम देखें सो रेस में हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट वी डोंट हैव एनी एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट तो है हमारा, लेकिन कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जांपल वी कॉल इट पी क्यू, सो वी विल इंडिकेट इट लाइक दिस। एक साइड में एरो देंगे, वो एक साइड का एरो का मतलब होगा कि इस लाइन को हम लोग एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेज। ये क्या कहलाता है? रे कहलाता है। ओके, so ray has a starting point but no ending point. रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है।
Now students, we talk about angles and types of angles. So first we try to understand what is angle. सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि angle क्या होता है. Okay, let's say that we have taken two arms here or two rays here. Okay, so the figure which is formed here, that is called the angle. This is called what? Angle. Let's say that it is x, and the name of this point is P, O and Q. So angle POQ is equals to x. इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एंगल को डिनोट करते हैं. ओके, सो हेयर दीज टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑल्सो. ये क्या कहलाते हैं? आर्म्स भी कहलाते हैं. ठीक है. सो एंड देयर वुड बी अ मेजरमेंट ऑफ एंगल. Okay, we represent it in the form of degree. Let's say that the x is equals to 60 degree. Okay, so in this way we represent the angle. बच्चों, हम लोगों ने एंगल के बारे में जान लिया. ठीक है, अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल. पहला क्या हमारा? एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल. ओके, acute angle क्या होता है? Basically this angle lies between, let's say that x is an acute angle, so it is greater than 0 and less than 90 degree. 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है. ओके, सो ये जो एंगल है यहाँ पर x, ये क्या हमारा एक्यूट एंगल है. 0 से बड़ा और 90 से छोटा है. बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, और धीरे धीरे जब हम इस साइड बढ़ेंगे, ओके, सो ये 90 से क्या होगा? कम होते चला जाएगा. सो ये एंगल क्या कहलाएगा? हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा. देखा, ये एक्यूट एंगल है. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द राइट एंगल. सो राइट एंगल बेसिकली द एंगल विच हैज अ वैल्यू ऑफ 90 डिग्री. ओके, सो दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? x equals to 90 degree. Okay, so figure will be like this angle. Let's say that this is the angle, so this angle is called right angle because the value of this angle is equals to 90 degree. क्योंकि x का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री है. So we will say that x is right angle triangle. Okay, now we talk about the obtuse angle. Obtuse angle. So obtuse angle is basically that is greater than 90 degree and less than 180 degree. Okay, so obtuse angle is basically what? It is greater than 90 degree and less than 180 degree. If we have to draw the figure of it, so this is the 90 degree. So if we move in the left side direction, so this angle will be obtuse angle. So this is the figure of obtuse angle. आपने देखा acute angle, right angle, obtuse angle. Okay, the next angle is straight angle. The next angle is straight angle. Straight angle, if the value of angle is equals to 180 degree, so this angle is called straight angle. Okay, so this angle is known as straight angle. अगर x का वैल्यू कितना हो? 180 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा एंगल है? ये स्ट्रेट एंगल है. नेक्स्ट वन इज वी हैव रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल इज बेसिकली द एंगल विच हैज द वैल्यू greater than 180 degree and less than 360 degree. Okay, so this angle is known as reflex angle, greater than 180 degree and less than 360 degree. Now if we have to draw the figure of it, so let's say that this angle is what? This is the straight angle. Okay, so that is the 180 degree. So if we consider this part, okay, so this part will be the reflex angle because this is the straight angle. So 180 plus something, so that is 180 plus something, it means greater than 180 degree. Okay, and less than 360, so this angle is called reflex angle. ये एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा.
After reflex angle, we have one more angle, and that angle is known as complete angle. That angle is known as complete angle, and the value of complete angle is equals to 360 degree. Complete angle का value कितना होता है? 360 degree. So let's say that there is a point. Okay, so the angle around the point, that is called the complete angle. ये क्या कहलाता है? Complete angle, and इसका value कितना होता है? 360 degree. So these are the different types of angles. Okay, so we have studied about the types of angles. Now we will talk about parallel lines. Let's say that if we have two lines, okay, if we have two lines, line M and line N, okay, so these two lines may intersect each other or they will not intersect each other if we extend the line. ये दो लाइन लेते हैं तो ये दो लाइन क्या कर सकते हैं? या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. ओके, सो इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, सो दैट these lines are called intersecting lines. ये lines कैसी कहलाएंगी? Intersecting lines कहलाएंगी. And if we take two lines and they do not intersect each other, even if we extend the line in any direction, okay, but they do not intersect each other, so these lines will be called what? Parallel lines. ये line क्या कहलाएंगी? Parallel lines कहलाएंगी. ऐसी lines जो कि आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी मिलती नहीं है. ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा एक सा रहता है. सो दीज लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. तो अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन्स हैं M और N, ओके, एंड वी हैव टू डिनोट दैट दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो वी विल राइट लाइक दिस M पैरेलल N. Okay, now there is a straight line which cuts these two parallel lines or two lines. Okay, so this line is called transversal line. ये line क्या कहलाती है? Transversal line कहलाती है. Okay, so in case it means that if there are two parallel lines or if there are two lines and there is a third line which intersect or cuts the two lines, at least two lines should be there. So this line will be called transversal line. ये line क्या कहलाएगी? Transversal line कहलाएगी. So as you can see that 8 angles are formed here. Okay, so the pair of angle 1 and angle 5, the pair of angle 4 and angle 8, pair of angle 2 and angle 6, pair of angle 3 and angle 7. These pair of angles are called corresponding angles. ये क्या कहलाते हैं? Corresponding angles कहलाते हैं. Corresponding angles. So 1 and 5, 4 and 8, 2 and 6, 3 and 7. Okay, so these pair of angles are called corresponding angles. And if M and N are parallel lines, so these pair of angles will be equal to each other. It means angle 1 will be equal to angle 5, angle 1 will be equal to angle 5, angle 4 will be equal to angle 8, angle 2 will be equal to angle 6, and angle 3 will be equal to angle 7. ये एंगल्स कब इक्वल होंगे? जब M और N कैसे हो? पैरेलल लाइन्स हो, और L जो हो हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन हो. इन दैट केस द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल टू ईच अदर. अब एंगल 4 and angle 6, angle 4 and angle 6, angle 3 and angle 5, angle 3 and angle 5. These pair of angles are called alternate interior angles. Alternate interior angles. Okay. And if we consider angle 1 and angle 7, okay, and angle 2 and angle 8,
These pair of angles are called alternate exterior angles. And if these two lines are parallel, then the pair of alternate interior angles will be equal to each other. It means angle 4 will be equal to angle 6, okay, and angle 3 will be equal to angle 5. Angle 4 will be equal to angle 6 and angle 3 will be equal to angle 5. Okay, similarly we can write angle 1 will be equal to angle 7 and angle 2 will be equal to angle 8. Alternate exterior angles are equal when M and N are parallel to each other. So angle 4 and angle 5, okay, and angle 3 and angle 6, these are called co-interior angles. These are called co-interior angles. Okay, and if M and N are parallel, then the sum of co-interior angles will be equal to 180 degree. Sum of co-interior angle will be equal to 180 degree. So these are the angles which are formed when a transversal line cuts two parallel lines, okay, and these angles are equals to each other. It means pair of alternate interior angles, pair of alternate exterior angles, corresponding angles, okay. I hope you all have understood it. जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, सो द एंगल विच आर मेड देयर, ओके, so these angles, pair of angles, let's say that it is angle A, it is angle B. So angle A is equal to angle B and it is called vertically opposite angle. It is called vertically opposite angle. And these angles are equals to each other. Similarly, if there is C and if there is D, okay, so angle C will be equal to angle D. I hope you all have understood each and every point clearly. Okay students, if you have liked the video, so share it with your friend and do not forget to subscribe the channel. Thank you very much.